आई मीन ये क्वेश्चन है क्योंकि परफॉर्मेंस आर्ट की सबसे मुश्किल बात ये है हाउ टू सेल इट. अभी वो कमोडिटी पूरी तरह नहीं बना है बिकॉज वो it's a shift from art being an object to art being an experience for the people. बाहर तो they have figured out how to sell it, उसकी documentation sell हो जाती है. There are other things like objects from the performance can be auctioned, sold, bought. उसकी films आप show कर देते हैं, you know, different galleries can buy the documentation जो कि video की form में है, and they can show it in their gallery and all of that. Performance pieces भी कई दफ़ा acquired होते हैं वहाँ पे, मतलब gallery can buy a piece of performance also. But पाकिस्तान में नहीं, of course नहीं. पाकिस्तान में अभी लोगों को इतनी समझ भी नहीं है कि परफॉर्मेंस आर्ट है क्या, विच इज़ वाई आई सेड कि परफॉर्मेंस आर्ट को अभी तक परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है. और परफॉर्मेंस अभी तक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बाय एस्थेटिक ऑफ थिएटर. यहाँ पे अभी तक वो ये समझते हैं कि थिएटर की तरह की कोई चीज़ बनाएंगे, ग्रैंड जेस्चर्स होंगे, ये सारा कुछ होगा, एक्टिंग होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी तो वो परफॉर्मेंस बन जाएगी. हालांकि इट्स नॉट लाइक दैट. सो येस, पाकिस्तान में अभी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, बट थिंग्स आर चेंजिंग. अब जैसे यू नो देयर आर कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड इन मल्टीपल प्लेसेस वेयर स्टूडेंट्स कैन कम, यंग पीपल कैन एक्चुअली लर्न. मैं खुद पढ़ा रही हूँ परफॉर्मेंस at FC College, and where I am trying to teach कि performance होती क्या है, how to look at it, how to use your body as a medium. वो हो तो रहा है, but अभी तक yes, galleries को अभी तक समझ नहीं आती how to curate a performance art show. I am actually in discussions with curating a performance art show. देखें वो कितना successful होता है यहाँ पे रहते हुए, but let's see. कुछ ना कुछ हो जाएगा. अभी हाँ, yes, there's no scope. कोई बहुत ज़्यादा bright future नहीं है अभी.